Good evening. Good to have you with us in this edition of the Urban Debate. As the farmers' protest enters the 22nd day, the Supreme Court today held a hearing on a bunch of petitions that have been filed against our farmers' protest. Now, the Supreme Court has said they're going to be setting up a committee to hold conversations, to mediate essentially between the farmers and the government, to hold these negotiations. These will have the representatives from various farmer groups. It will also have third-party experts. Supreme Court specifically, in fact, even mentioned Mr. P. Sainath. Of course, the constitution of this committee will only take place once the court has heard all sides, including the farmers' side. But there are some of the things that have been said today, and I wanted to take you through those takeaways as we take our conversation forward. The Supreme Court observed that the farmers have a right to hold non-violent protests. They said, we make it clear that we recognize the fundamental right to protest against a law. There is no question of balancing it or curtailing it, but it shouldn't damage anyone's life or property. Supreme Court said protest purpose must be fulfilled by non-violent means, and the protest, of course, must be about specific issues. They also said we are proposing an independent, impartial committee before whom both the parties can state their case while the protest goes on. So the protest will go on. There is no bar on that. Neither have they been asked to move from that location yet. But the Supreme Court did say that this committee will give its opinion, which we accept the parties to follow. We observed yesterday that the centre is not successful in negotiations. We do not think that the farmers is going to really accept the conclusions that the centre makes them. So let the committee really decide. The Supreme Court of India said, we are with the plight of farmers and sympathetic to their cause. But you have to alter the way it is going. You have to convince and bring out the solution. So the Supreme Court said, we are saying to you, you have a right to protest and we will not interfere. You carry on your protest, but your protest must have a purpose, and that must be fulfilled by talking to someone. Now, while the farmers are officially yet to take a stand or respond, they say they're awaiting the order copy, then they're going to speak to their legal experts, those who are guiding them and advising them. But a few of them in our conversations, in individual conversations that our reporters have had through the day, they have said that they're not in favor of another committee, that this is not really going to be a solution. So let me, in fact, say good evening to our panelists, and over the next 1 hour, I'm also going to take you through what else transpired in the courtroom. Very interesting conversations between the Chief Justice of India and Harish Salve, who was representing one of the petitioners. Then there was Mr. Chidambaram, who was representing the Punjab government as well. He, of course, will be joining us later on in the show. Let's say good evening to Tuhin Sinha, leader of the BJP, joining us this evening. I also have Mr. Dushyant Dave, senior advocate of the Supreme Court, joining us right now. And Deshratan Nigam, senior lawyer, also joining us right now. But first up, I want to go across to Rakesh Tikayat, national spokesperson for the Bharatiya Kisan Union, a group now very intrinsic to these protests and also to the hearing that's going on in the Supreme Court. Tikayat ji, हमें बताइए अब आगे क्या सोचा है, कैसे करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी बनाई जाएगी आप लोगों से बातचीत करके, और वो कमेटी फिर डिसाइड अपना ओपिनियन देगी कि क्या करना चाहिए. हेलो जी, राकेश टिकैत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ आ रही है जी. अब आगे क्या क्या सोचा है? ये कहा है कि हम डिसाइड करेंगे. हमारे पास तो कोई अभी नोटिस तो कोई आ नहीं, वो हम पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं कि हमको पार्टी बनाया गया है. हमारे पास तो कोई अभी कोर्ट से या सरकार की तरफ से कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया, ना कोई हमको कोई चिट्ठी आई. तो वो आएगा तो हम चर्चा करेंगे आपस में कुछ में. जी नहीं राकेश जी, इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं सही बात है, वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राकेश टिकैत, कि अभी तो फार्मर्स यहाँ हैं भी नहीं, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में भी नहीं है हमारे पास, तो हम उनके बिना कमिटी में कौन होएगा और कैसे होगा वो नहीं डिसाइड करेंगे, तो वो तो आपसे बातचीत करके ही होगा। लेकिन क्या ये आइडिया, ये सजेशन मंजूर है प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई बात तो करनी पड़ेगी, आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन बातचीत भी करनी पड़ेगी। नहीं, बात को कौन मना कर रहा है? बात तो हम करना चाहते हैं सरकार से। भाई टाइम तो हमें कहाँ मिलना है, किस जगह मिलना, टाइम, जगह और स्थान तो सरकार बताएगी ना। हम तो पिछले 8 तारीख के बाद का इंतजार कर रहे हैं ना सरकार का, कि सरकार हमको बतावे और बात करे हमारे से। तो हमने कोई मना नहीं करा कभी भी। जब कोई चिट्ठी आएगी उनका, जैसे पहले भाई 6 बार की मीटिंग पहले हुई, पहले भी तो 6 बार की मीटिंग हुई, तो सरकार ने ही तो बताया ना कि आपका 11 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, इस तारीख में है और आपको जब मिलना है। सरकार ने ही 9 तारीख को वार्ता होनी थी, सरकार ने ही हमको वार्ता तोड़ी, हमने तो वार्ता नहीं तोड़ी सरकार से। तो सरकार बतावे कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि कोर्ट ने कहा है ना, जब सरकार ने नहीं बताया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप बात करो उनसे। हम तो तैयार है बात करने के लिए, पर हमारे पास में कुछ आएगा तो हम चर्चा करेंगे सर। So let me get a response from Tuhin Sinha. Is this the way forward? Tuhin Sinha, the court has very clearly said their right to protest stands. Farmers have a right. उनको protest करने दीजिए, बातचीत करिए, उसी से निकलेगा solution. जी, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे आ जाए तो राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल फार्मर्स के पास है, आपके पास भी है, आपके इश्यूज को लेके, मेरे पास भी है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नेचर ऑफ so yes, right to protest very much, but at the same time the Supreme Court has been very careful stating that protests need not be, protest cannot be, that protest can, for the sake of protest, to articulate a, if you, I just heard the representative, the Kisan representative, sir, saying that we have not had talks from 8 December onwards. But I have with me the detailed proposal, the exhaustive proposal, written proposal sent by the government to the farmers on the 9th of December. I don't know whether you have read it. Every point has categorically explained in black and white. I can go through some of the observations. For example, the first issue, there is no system, the first protest issue. There is no system for the registration of agricultural contracts. It explains very clearly under the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, there is already a provision to make arrangements for registration of contracts by the state government. Furthermore, it also gives an additional explanation in as a proposal. Until the state government set up a system of registration, suitable arrangements will be put in place to make the copy of all written agreements available at the concerned SDM office within 30 days of signing the agreement. Similarly, when it comes to MSP issue, it has been, the government is willing, has given an assurance that the MSP will stay. Now, these private players entering into the market will not remove the whole existing setup of government buying agricultural produce. So I can go take you through the. No, we've all gone through the list, Tuhin Sinha. I think that's not the point at all. We've all gone through the list. The farmers have gone through the list. They've discussed it. उन्होंने तो 10 तारीख को ही बोल दिया कि ये हमें acceptable नहीं है. बातचीत आगे चढ़नी होगी. Now the situation where it's come to. Let's talk about what's happened today. Yes, let's talk about what the Supreme Court has said today. Yeah. Yes. So I think the Supreme Court's observation that the protests need to have a purpose is a very telling, is a very sharp statement, because today where the protest stand is, they have come to a very single point agenda that you have to repeal the farm laws. So I am asking you, can the 1991 reforms be repealed? Can the GST reforms be repealed? These are reforms which had been waiting to happen for the last 15 years. Almost every top leader of the country, almost every top political party of the country has supported these reforms at some point or the other. Today, Arvind Kejriwal tells that report in the assembly. Now, whereas on 22nd November, his was the first state government to actually notify one of the laws passed in parliament. So, if he wants to behave like the way Rahul Gandhi behaved in 2013, he wants to tear apart notification, how are we to blame?
You We are will see, ready for Mr. Tuhin engagement. Sinha. I have no Honorable other Prime political Minister, representatives Honorable here Prime because Minister I has see, requested. today at this point, I see no role that has to be played by any other political representative. This is a matter between the center and the farmers, and now, of course, the court. But let me bring in Dushyant Dave, senior advocate of the Supreme Court. Mr. Dave, for many people, the first response is, oh, but look, this is what happened when the Shaheen Bagh protests were taking place. There was a mediating committee that was set up to resolve the issues between the two sides, but that essentially didn't help. Now, can you help our viewers understand what can be achieved via this committee? Well, I mean, if the Supreme Court feels that a committee can resolve the issues, Supreme Court can make an effort. There's nothing wrong about it. Supreme Court tried it in Ayodhya also. You remember Sri Ravi Shankar and others were constituted by the Supreme Court and they failed miserably. So, I mean, committee is not going to really resolve the issue. But I would still say that one Supreme Court can give it a chance, a shot, provided, as Chief Justice today requested the learned Attorney General, that government should agree that the legislations which are being objected to will not be implemented in the meanwhile. So, in other words, the government should issue a notification saying that the operations of these two legislations for the moment remains stayed. And if that happens, then I think the dialogue can take place in an extremely cordial manner. Today, with the 2-3 amendment laws hanging as swords on the farmers, it would be very difficult to expect the farmers to have a very free and frank talk. So I think what the Supreme Court suggested to the Attorney General, government should have on its own offered to the farmers that we are willing to issue a notification tomorrow and stay the operation of these legislations. Please come on the discussion table and let's discuss, free of all doubt. But that government didn't do. Let us hope that today's Supreme Court's advice is acceded to by the Attorney General and the Government of India. But Mr. Dave, I'm a little confused here. I understand what he's saying, but already when the Chief Justice of India asked this question, that will the government put these legislations on hold pending the negotiations and these conversations, the Attorney General seemed to suggest that's going to be very difficult, and in fact the Solicitor General was completely of the view that it's not possible. Do you see there to be a window still for the government to reconsider that? Well, I have my serious doubt that government is sincere about its offer of discussion. If government was sincere, then government would have readily accepted this as a suggestion from the court. Then it's not government which is backtracking, because egos are very important in this kind of political fights. The government today and unfortunately the Bharatiya Janata Party appears to suggest that these protests are really sponsored by the opposition, which is not true. The farmers are life of this country. We speak about Jai Jawan and Jai Kisan. Why not respect them and talk to them on a level playing field? And that level playing field can come if the government readily agrees to stop the implementation of the legislations and discuss all these argument that clause by clause we are willing to discuss. That can't be discussed when the laws are remaining in force. So I think it is really very surprising, and I'm shocked that the Solicitor General should override the learned Attorney General and say that we are not going to do it. The Attorney General perhaps would be well advised to advise the government that yes, we must agree to this suggestion of the Supreme Court. It is in public interest. It is in the interest of thousands of farmers who are suffering in this cold. Many of them have died, and it would therefore bring a lot of goodwill for the government. But I don't know whether that kind of an approach is really possible in today's circumstance. In fact, let me ask that to Rakesh Tikayat and then get a response from Tuhin. Rakesh Tikayat ji, क्या अगर ये सरकार कहती है कि ठीक है, जब तक हमारी बातचीत चल रही है तब तक जो है हम ये लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब क्या आप बातचीत करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स कह रहे हैं नहीं, पहले ये लॉज हटा दो फिर आगे बात होगी, पहले ये लॉज को विड्रॉ करो. नहीं, हम बात कर लेंगे. ये नहीं कहा अभी कि पहले लो हटा दो जब हम बात करेंगे. ये तो सरकार कह रही है कि हमने कानून तो नहीं हटाने, आपको बात करनी है तो आप बात कर लो. सरकार पहले कहती है भाई अंदर क्या होना है, अंदर कमरे में ये तो बाहर नहीं आनी चाहिए ना बातचीत. सरकार कहती है कि आप बातचीत कर लो
लेकिन हम कानून चेंज नहीं करेंगे, अमेंडमेंट में बात करेंगे। तो सरकार कहती है, फिर किसान भी कहता है कि पहले हम बातचीत जब करेंगे, पहले इसको आप हटाओ। तो अंदर क्या बात होनी है, अगर हाउस में बिल पास होने जा रहा है, बजट जब होता है, तो बाहर की जो रेड कलर की संदूकड़ी है वही तो दिखाई देती है ना, ब्रीफ केस जी। उसके बिल के अंदर क्या है वो पहले ओपन थोड़ा होता है जब पार्लियामेंट सेशन होता है। और तो ये क्यों कह रही है, इनको किसने राइट दे दिया? भाई आप टेबल पे बात कर रहे हैं और बात करने से पहले ही आप अपना रिजल्ट सुना रहे हैं, तो आपने तो फाइनल कर दिया। इसलिए सरकार बात करना नहीं चाहती। 8 तारीख के बाद में सरकार ने हमसे कोई बात नहीं करी हो तो बताओ। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको बात कर लो, बिल प्रपोजल तो नहीं भेजा वापसी पर होगी। आपने वो एक्सेप्ट नहीं किसान किया। भी कह रहा कि हाँ तो ठीक है, उन्हें भेजा है ना, नहीं कह रहा हमने, उसमें क्या दिक्कत होगी? हमको मंजूर नहीं है वो। सरकार ने इस तरह का बिल लेकर क्यों आ गए ये, बगैर किसान की मर्जी के? सरकार ने आज भी तो कहा है ना कोर्ट ने कि इसमें कमेटी बनाओ। अगर ये कमेटी पहले ही बनाकर उसमें बातचीत कर लेती, बना लेंगे, इसकी सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में ही बना लेंगे, ये बिल विड्रॉ कर लो और एक कमेटी बन जाएगी, नया बिल फिर बना लेंगे। एमएसपी पे इनको कानून बनाना है, उसमें थोड़ा कुछ पूछना किसी से। ये एमएसपी भी कह रहे कि एमएसपी ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी, हम उसको खत्म नहीं करेंगे। दिक्कत तो वही है कि खत्म नहीं कर रहे और पहले जैसी रहेगी तो किसान तो बर्बाद होगा, क्योंकि बिल में जिस तरह के क्लॉज इन्होंने दिए हैं, तो एमएसपी को फ्री छोड़ दिया और होल्डिंग के लिए इन्होंने पूरा कैपेसिटी बना दिए, व्यापारी ने गोदाम बना दिए। तो इसका मतलब पूरा 60 गांठ से तैयारी के साथ में बिल को बनाया गया है व्यापारियों के। अगर देश का बिल कोई व्यापारी बनाएगा तो अपने कंडीशन से बनाएगा, किसान से पूछोगे तो उसमें क्लॉज डलवाएगा। तो इस तरह का जो पूर्ण रूप से जो फार्म बिल ये इन्होंने बनाया है, ये तीनों बिल को विड्रॉ करना पड़ेगा, इनको वापसी करना पड़ेगा, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, लिखित में नहीं चलने का, कानून बनाना पड़ेगा। मतलब आज भी 1967 के बाद में आज भी किसान उसी पे ही लड़ रहा है, हमको जो आपने 1967 में कानून बनाया आप हमको वही दे दो। होना तो आज ये चाहिए कि भाई जिस हिसाब से मार्केट बढ़ी है, हमारी फसलों की कीमत बढ़नी चाहिए। आज किसान 1967 के कानून पर लड़ रहा है। क्या 1967 में कोई गाड़ी आई, उसने कोई चेंजिंग नहीं करा उसमें? 1967 में कोई ट्रैक्टर बदला, कोई बदलाव नहीं आए। मतलब आज हम उसी पे लड़ रहे हैं, हमको आप वही दे दो। ये कह रहे कि ना वो चलता रहेगा, लिखित में कुछ नहीं देने के। हमारा भी तो मन करता होगा कि हम भी रिवाइज करें, हम भी देश और दुनिया का एंजॉय करें, हमारा भी हिसाब किताब दे दो भैया। तो 1967 के बाद में किसी चीज की कीमतें ना बढ़ी हो। अगर कीमतें बढ़ी है तो हमारे भी चीजों के तो कीमतें बढ़े। हम तो चलो जो सरकार ने मान लिया वही मान लिया, आप हमको वही दे दो पहले। आप उसको भी नहीं दोगे, आप कहोगे कि नहीं उसको आधे रेट में आप बिकेगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं राकेश टिकैत, ये तो सभी मानते हैं कि कोई एंजॉय कर आपको और किसानों को सही भाव मिलना बहुत जरूरी है, जो नहीं हुआ इसमें कोई दो राय नहीं कि रिफॉर्म्स आने जरूरी हैं, जो सालों से नहीं हुए, हर पार्टी ने वादे किए, लेकिन जो आए रिफॉर्म्स वो सही आए कि नहीं, अब वहां पे जो है डिसएग्रीमेंट है। तो हिंसिना, प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट दुष्यंत दवे एंड राकेश टिकैत हैव सेड। देखिए, हमारी मंशा जो है छोटे किसानों के लिए और जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए विकल्प बढ़ाने की, लेकिन जो मैं अभी सुन रहा हूं उस डिस्कशन से भी यही लग रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो छोटे किसान और मार्जिनल फार्मर्स के लिए विकल्प नहीं बढ़ाना चाहते, वो उन्हें बांध कर ही रखना चाहते हैं। और क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में एक शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट हुआ है? आज से 15 दिन पहले क्या थे डिमांड कि एमएसपी को लेके आप अश्योरेंस दीजिए, ये जो सिस्टम है ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स उसको डिफाइन कीजिए। अब जब हम सभी चीजें लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में देना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि आप लीगल अमेंडमेंट, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमने मना नहीं किया है कि लीगल अमेंडमेंट होगा, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो लॉज का, अगर आप एक ही बात पर अड़ जाते हैं कि ये तीनों लॉज रिपील होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा जो है, वो जो आप रिजर्वेशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कुछ और है और मंशा कुछ और है। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा तबका है, एक बड़ा मेजॉरिटी है किसानों का जो लाभान्वित हुआ है इन्हीं लॉज से, और यही कारण है कि ये पूरे जो आंदोलन है वो एक जगह पर केंद्रित है। बाकी बहुत से ऐसे राज्य हैं बल्कि अधिकांश ऐसे राज्य हैं जहां की किसान इससे लाभान्वित हुए। तो एक बार फिर हम आपको यही
ये कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक बार जो आप ध्यान से उसको 20 पेज पन्नों को पढ़िए, आपके सारे कंसर्न्स एड्रेस कर लिए गए हैं। उसके बाद भी कोई कंसर्न है तो प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है जब तक आपके कंसर्न एड्रेस नहीं होंगे, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और हम आपको बातचीत के लिए आमंत्रित करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये रवैया लेके चलेंगे कि किसान ये लॉज रिपील होंगे, तो ये तो वही हो गया कि जीएसटी अब आप रिपील कीजिए, आप सारे रिफॉर्म्स रिपील कीजिए। अभी आप कह रहे थे 1967 से जो है चेंजेस नहीं हुए। जब चेंजेस आ रहे हैं तो खुले मन से उनको डिस्कस करने के लिए तैयार तो होइए आप। Mr. Dushyant Dave, I want to bring you in as well on this conversation. We understand you and several others, senior lawyers, will perhaps also be representing and advising these the farmers in these cases and speaking to them. What should be, their response from here on? Should they be part of this mediation? And if the committee makes certain suggestions, are they binding on both sides? Well, I don't know. I think what my esteemed friend from the Bharatiya Janata Party said, I completely disagree with it. If the government is so sincere, what prevents the government from bringing an ordinance and simply assuring that the laws, the existing laws, the new laws which farmers are aggrieved about, stand amended to ensure MSP, stand amended to ensure that judiciary will have right to intervene. These two provisions, if they are brought by ordinance, you can issue all kinds of ordinances to even bring love jihad, this kind of a completely nonsensical issue. Then why can't you do it to really allay the apprehensions and fears of the farmers? If you start, you have to create goodwill. The ball is in your court, the government. You have to create the goodwill. The farmers are apprehensive. Farmers are under fear. You have to remove that fear, and you can't simply say Prime Minister has assured this, Minister has assured this. That is not enough. You have to bring the amendment into the law by an ordinance. Then you can tell the farmers, see our sincerity, we have amended the law, now let us talk about it. I think government is really misguiding the farmers and the country on this issue, and which is very sad, because if Prime Minister and his ministers are sincere about really standing by the farmers, it takes a minute. It doesn't take more than half an hour to draft a ordinance and bring it. President would be more than happy to sign it. So I think this is completely illogical. They are really misleading the farmers and the country, and they should stop at that. It's not nice to say that farmers are making all kinds of demands. Farmers don't understand. You have to make them understand. You have to allay their apprehensions. You have to reassure them. That's your job. You are the government. You have brought these legislations without consulting anybody. You have rammed it through Parliament in COVID. You have rammed it through Rajya Sabha. So, we know how this voting took place. So, I think it is important for government, if it really means serious business, to resolve this crisis, which it should be resolved, which can be easily resolved, is to straight away issue ordinances and finish with it. Tuhin Sinha, is that an option, especially for a government that does believe that ordinance route is an effective route to bring in tough legislations? For us to consider the legal amendment, first, the precursor to that is the written exhaustive clarifications and the suggestions we have submitted. Now, if they outright reject it, that only shows that this was just an alibi. I am still requesting, come forth, and what Mr. Dave is saying, let the farmers' body say that. Why is the farmers' body just bent on completely repealing and outright rejecting whatever proposal we give? If the farmers' body come up with a similar proposal, has the government said we are not considering that? So I think there is some amount of confusion. No, as far as the MSP is concerned, for example, the government has not said that we will bring in a law. The government has only given an assurance that okay, we are going to protect the current MSP. But that's not what they are asking for. They are saying MSP ke liye law leke aao. In the first place, the very reason why MSP was not included, if you look at the track performance, this was not a bill about MSP. Now we are ready to give an assurance. We are not close to the idea of bringing in an amendment. But now the point of discussion is not that. That is what I'm trying to explain. It has gone beyond that. In the last 15 days, there has been a significant shifting of goals.
It is my way or the highway. Either you repeal all the farm laws. All kinds of apprehensions are being nurtured. All kinds of apprehensions are being promoted, which are far removed from reality. Even if we give an assurance on MSP beyond the written one which we give and consider amendment, I am telling you that tomorrow some apprehension maybe on contractual farming will come up. The nature of these protests, and that is why I once again repeat what the Supreme Court had also categorically said today. There is a lot which is that the Supreme Court has said between the lines. The protests need to have a motive. It can't be protest for the sake of protest. Correct. But their protest is for the sake of farmers and the farmers' well-being. Let me thank Mr. Dushyant Dave. Thank you so much for joining us, and also say good evening to Deshratan Nigam, who's joining us right now. Mr. Nigam, one interesting conversation, and it was exhaustively discussed today, is the farmers' right to protest, and the fact that the Supreme Court has allowed them to protest today, continuing at the location that they are, while saying that of course they have a right to protest as long as it doesn't interfere or lead to any kind of violence or law and order issue. So essentially the protest will continue at the sites where it has so far. Your response to that? See, the fact is what Supreme Court has said, the protest has to be subject to public order. Yeah. One, and it has to be in accordance with law. What is the law on the subject of protest? Protest has to be at designated places, and the Supreme Court has very categorically said that you cannot block the road, as was made clear in Shaheen Bagh's judgment. No interference with the normal movement of people and the goods. So therefore, that is covered under in accordance with law. So I think Supreme Court has also made it very clear, and Bharati Kisan Union was represented today through Counsel AP Singh in the court, and it is reflected in the order itself if one reads the order. Other unions were not there, and therefore since others were not there, so Supreme Court wanted them to also come forward and make their suggestions. And see, all those things are very important. The doors of negotiation should remain open. Yes. It's not the parties that fail, it's the negotiations that fail, and so that they can be again restarted. On one hand, the Supreme Court made an oral observation yesterday, which is not reflected in the order today, that the negotiations are bound to fail given the positions taken by the two respective parties. However, at the same time, Supreme Court is again resorting to negotiations, saying the negotiation should take place as per this particular structural format. And that is what is a committee is being created of independent persons who will go into it and submit a report. And they will look into all the suggestions and ideas from all the parties. And it's not a very good negotiating position if one party takes 7 steps, the 7 proposals, and have come forward, the other party still sticks to it, position. That's not a very good negotiating position, and then negotiations bound to fail. As a senior mediator, I've handled some very complex, negotiations between multinationals, and therefore it is said in all classical books, both the parties have to be flexible. Okay, I will get Mr. Pushpender Singh, President of the Kisan Shakti Sangh, to come in and respond to what you're saying. But let me just point out, Mr. Nigam, who is blocking the roads is something that is yet to be cleared. It also became a big point of contention in the Supreme Court today. There are enough and more visuals that show that a lot of the blocking of the roads is actually happening by the authorities with concretes and barriers and barricades and wires, digging up the roads. So to unfairly just say it's all the fault of the farmers who are sitting there and protesting may not be correct. It's together both sides who've come there and and ended up in a face-off, which is what has led to this situation. Now, Pushpender Singh, good evening. Thank you for joining us, Pushpender Singh ji. ये कहा जा रहा है कि अगर सामने की तरफ से 10 पॉइंट का प्रपोजल आया, वो 7 चीजों पे मान गए हैं, चेंजेस करने के लिए तैयार है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप सारे लॉज रिपील कीजिए. ऐसे नेगोशिएशन कैसे चलेगी? देखिए तन्वी जी, किसान जब ये अध्यादेश 5 जून को पारित किए गए थे, उसी दौरान से ही लगातार इसका विरोध करता चला आ रहा है, आशंकाएं जताता चला आ रहा है. तमाम तरह के जो है हमारे बड़े भाई भी बैठे हैं, आदरणीय टिकैत साहब, हमने भी अलग अलग मंचों पे, फोरम पे इस बात को रखा है.
लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इसको पास कर दिया। आंदोलन बढ़ा, दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया, तो बीच में हम लोग तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर, जो ऐतिहासिक रूप से जहां प्रदर्शन होते रहे हैं, सारे देश का किसान वहां इकट्ठा होने के लिए चला था अपने घर से। आपने उनको बीच में रोक दिया, आपने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिए, तो वो कहां से अचानक वो वहां से गायब हो जाते? वो वहीं बैठ गए। और रात में 5 डिग्री 4 डिग्री में बैठना कितना मुश्किल काम है, ये किसान ही समझ सकता है। तो ये सरकार की वजह से हम वहां बैठे हैं। हमारी मंशा किसी नागरिक को, इस देश के को परेशान करने की नहीं है। हम स्वयं परेशान हैं। स्वयं हमारी आजीविका का ये प्रश्न, जीवन मरण का प्रश्न ये बना हुआ है। इस वजह से जो है हम इस आंदोलन पे को कर रहे हैं। अब आई बात नेगोशिएशन की, या जो सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि भाई आंदोलन का हमारा अधिकार है। आप यदि हमें वहां आने देते तो शायद ये सड़कें भी इस तरीके से जाम ना होती। और इसमें कमेटी बने या कमेटी के माध्यम से हो, और जब इतने सारे प्रस्ताव आ जाते हैं कि भाई ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, तो इसीलिए किसानों ने ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है भाई, इसको सारी चीजें, जब नई नई कोई चीज कार आई है मान लीजिए आपके घर में, उसका टायर भी खराब है, ट्यूब भी खराब है, इंजन भी खराब है, बैटरी भी खराब है, तो भैया इस गाड़ी को तुम वापस ले जाओ, दूसरी गाड़ी जैसी हम चाहते हैं वैसी बना के हमें दे देना। ये इंस्टेंस कोई गलत नहीं है। आपके यहाँ भी नई गाड़ी आएगी, उसमें कमियां यदि ज्यादा होंगी, आप कहोगे भाई मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, दूसरी फ्रेश गाड़ी बना करके दो, या फ्रेश गाड़ी मैं लूंगा। तो ये जो है, किसानों का कोई हठधर्मिता नहीं है, कोई जिद नहीं है। किसान परेशान है और अपनी ही चुनी हुई सरकार के सामने इस देश के नागरिक हैं, अन्नदाता हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जी। would you like to respond to that? देखिए, जितने चेंजेस की बात ये कर रहे हैं, चेंजेस से ज्यादा जो है हमने एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे प्रोविजन जो है ऑलरेडी हैं, वो पढ़े नहीं गए थे। एमएसपी का जो जिक्र था वो हमने आवश्यक नहीं समझा था इस बिल में, क्योंकि आप 6 साल में हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। पल्सेस में जिस प्रकार से एमएसपी की वृद्धि हुई है, लेकिन आज हम वो भी अश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं। तो ये अश्योरेंसेस जो है वो क्लैरिफिकेशन है, ये परिवर्तन इतने नहीं हुए हैं। और वैसे भी मतलब ये तो राजनीतिक पार्टी पे आप छोड़ दीजिए ना, कि अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं, आपकी जो आशंकाएं हैं, आपके जो रिजर्वेशंस हैं, वो हम कंसिडर और वो हम उसको एड्रेस करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ये हम बार बार कह चुके हैं और दोबारा दोहरा रहे हैं। तो केवल इस बात पे अड़ जाना कि आपको ये बिल पसंद नहीं है, इसमें दिक्कतें हैं, आप फ्रेश लाइए, तो आपको भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कंसिडरेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जो है एक बीच का रास्ता निकल पाएगा। मेरा ये सवाल है, वन क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग पुष्पेंद्र सिंह इज कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी सेटअप होगी, उन्होंने अभी पूरी उसकी डिटेल्स डिसाइड नहीं करी, क्योंकि आज वहाँ पे किसानों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था पूरा। अब लेकिन क्या किसान यूनियंस तैयार हैं इस कमेटी के वाया नेगोशिएट करने के लिए, और जो वो फिर ओपिनियन दे उसको मानने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। जहां तक वार्ता का प्रश्न है या बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रश्न है, कभी किसी किसान ने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते या बातचीत किसी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। और लोकतंत्र में और कोई तरीका भी नहीं है किसी चीज का हल करने का। तो लेकिन आप कम से कम प्रीड कंडीशंस लगाना, या पहले एक लोकतांत्रिक जिन्यून जो आंदोलन हो रहा है उसको तरीके से बदनाम करना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कनाडाई, तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, इससे एक अविश्वास की स्थिति आ गई है। तो जब तक आप इसको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कुछ दिनों के लिए आप इसको सस्पेंड कर दें, अगर आप इसको हटा दें रास्ते से कि ठीक है भाई अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे, कमेटी बनेगी, वो निर्णय लेगी, किसानों को वो संतुष्ट करेगी, तमाम पक्षों से वो बातचीत करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने वाली बात है। लेकिन उसको भी सरकार ने आज नहीं माना। उन्होंने कहा हम बातचीत करके खुद बताएंगे कि भाई हम सस्पेंड करना या अबेयंस में जिसको कहना रखना कहते हैं वो करेंगे। तो कम से कम जब तक निर्णय ना हो जाए, जिस चीज को हम नहीं चाहते उसको आप साइड में रख सकते हैं, ऐसे कानूनी प्रावधान करने का जो है स्कोप है, उसको कर दें। उसके बाद बातचीत शुरू हो जाए, और अगर उचित समझे सभी लोग, किसान नेता भी बातचीत कर लें, और रामलीला मैदान दे दिया जाए, या कोई ऐसी जगह स्थिति दे दी जाए। रामलीला और जंतर मंतर ये मध्य एक रास्ते हैं, नहीं तो जहां हम बैठे वहां हम बैठे ही हैं। आप लोगों को कोई तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हमें तो तकलीफ है।
पर यह कहा जा रहा है कि तकलीफ हो रही है, आपने रास्ते बंद करवा दिए हैं, दिल्ली के लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, उस वजह से जो अंदर सामान आ रहा है वो आराम से आ नहीं पा रहा, जिनको काम के लिए गुड़गांव से दिल्ली जाना है या नोएडा से या बाहर से कहीं से आना है वो आ नहीं पा रहे हैं। और ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ये सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। देश रत्न निगम अभी एक लॉयर है वो हमारे साथ, वो भी यही कह रहे हैं कि जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है आप वहाँ जाएँ और प्रोटेस्ट करें, आप कहीं भी नहीं कर सकते। नहीं, देखिए 2 महीने तक जब पंजाब के रेलवे ट्रैक पे पड़े हुए थे, किसी ने कोई बातचीत की क्या? किसी चैनल ने इसकी चर्चा की? किसी ने कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद जब रामलीला मैदान के लिए आ रहे हैं, जहां ऐतिहासिक रूप से भाजपा हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी पार्टियां अपने आंदोलन करते रही हैं। अन्ना आंदोलन वहां हुआ, बाबा रामदेव का आंदोलन वहां हुआ और ऐतिहासिक तमाम आंदोलन और रैलियां वहां होती रही हैं, तो इनको वहां आने दिया जाता? उसको तुमने बीच में तुमने रोका है भाई, हमने कुछ नहीं किया। आप उसको रोक करके वहां बैठे हुए, तो हम जो है अपने शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठ गए। भाई आपके पास सारा तंत्र है, ताकत है प्रशासन की, तो आपने हमें रोक दिया। हम तो हाथ जोड़ करके वहां विनती कर रहे हैं, वहां बैठ गए। अब आप बताएं कि जो है किस तरीके से इस मामले का हल करना है, तो आपके हाथ में। आपने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिया, उसको सस्पेंड कर देते और बातचीत हो जाती। उसके बाद जैसा ही नया कानून आता सबके संतुष्टि का, वो आ जाता। Mr. Nigam, would you like to respond to this? See, again, let me point out certain things that if you look at all the newspaper reports when the agitation became, they said Delhi jam kar denge, Chakka jam kar denge. So they were all the statements of the Kisan leaders. It is there, and therefore administration will not sit idly. They will have to take steps and preventive steps as well. Also keeping in mind that the farmers have a right to protest. So that kind of balancing was done by the administration. Yes, I know that I also face difficulty. If I have to leave, I have to leave 2-3 hours before, because I'm not very sure whether I'll be able to reach my office and do an online hearing that I'm supposed to do. So all those problems it is being faced by me and like many people at the border, and I have seen it personally because one of the site is very near to my place. And at the same time, again I am reiterating, this is not a sudden ramming of the law. 3 committees of the CMs were made. One, and it started during Congress's time when Huda was one of the or the first committee. Chief Minister of Haryana, Mr. Huda, was the chairman, who also recommended these changes that have come in the law. Then Mr. Narendra Modi was the also head of the committee of the southern states. Then Nitish Kumar, or probably Mr. Patnaik, was also there in the 3rd committee, who also recommended the same, going deeply into it. Then another committee was made by the minister, which consisted of Minister of Agricultures of all the states. They also recommended the same changes in the law. And therefore, after due deliberation and consideration, this law has come. Now the politics has started. All these leaders of all the opposition parties were there in those committees, and they recommended this. And there was a stand by these political parties. In the parliament, Mr. Kapil Sibal or Mr. what Mr. P. Chidambaram said about these laws, or Mr. Tikayat also supported this. It is all there in the newspapers when the ordinance had come. So now what is going on is the real politics. And that is why Supreme Court said you have to convince about these laws, not protest for the sake of protest. Go issue by issues. Whatever is wrong, you can't say blanket protest for years and then you say repeal the laws. This is not how the governance works. This is not how the parliament works. Parliament has passed the law and mandated this government to implement it by a majority vote. And let me tell you, there are 621 farmers organizations, and there are very few in this which are participating. Should you ignore the rest 580 or 600 organizations, farmers organization, who have not said a word? And I've heard number of leaders, farmer leaders on various channels and supporting this law. So please come forward if you have an issue. You can't have a blanket stand. Okay, let me take that. I have 2 farmer representatives. राकेश टिकैत, ये तो डायरेक्ट आप पे भी चार्ज है कि पहले आपने भी इन ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट किया और अब ऑपोजिशन पार्टीज ने जैसे पहले कुछ और कहा, अब स्टैंड बदल रही है, वैसे आपने भी इस पे स्टैंड बदल लिया है। देश भर में अगर 600 ग्रुप हैं फार्मर ग्रुप्स, तो 590 तो मान गए हैं, आप ही लोग नहीं मान रहे। हाँ,
अजय वे कौन से हैं, एक बार उनको हमें भी मिलवा दो, उनके गांव में चलते हैं, वे कौन सा फार्मूला उनके पास में है वो फार्मूला हमको भी सिखा दो। भाई उनकी फसल अगर एमएसपी से ज़्यादा पे बिक रही है तो फिर तो ठीक बात है, वो कहाँ के हैं उनके एड्रेस दे दो, और कुछ लोग चलते हैं हम भी उनसे कंसल्ट कर लेंगे, हमको भी वो फार्मूला सिखा दो कि जौन सा फार्मूला बढ़िया है। यहाँ तो नहीं मुझे लगता कोई किसान तो मुझे मिला नहीं देश में के जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने भी काफी फार्मर ग्रुप्स और एक्टिविस्ट से बात करी है। ये तो मानना पड़ेगा राकेश टिकैत जी आपको कि कुछ ही प्रदेशों में ये के किसान कुछ नंबर में जो है वो आके कर रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा में जिन जिन चीजों की खेती होती है वहाँ का जो मंडी का सिस्टम है वो अलग है, वो महाराष्ट्र से अलग है, वो तमिलनाडु से अलग है, तो सारे किसानों का रिएक्शन सेम भी नहीं हो सकता। पर ये कहना कि देश भर के किसान आपके साथ है शायद सही नहीं होगा। मतलब आप अच्छा मध्य प्रदेश में चना अगर किसान 3,500 रुपये क्विंटल बिक रहा है और एमएसपी 5,000 रुपये है तो मध्य प्रदेश का किसान खुश है क्या? धान का किसान खुश है? आलू का, मक्का का किसान खुश है? आप ट्रेन चलवा दो तो नहीं यहाँ बुलवा लेंगे या वहां से ही आंदोलन शुरू करवावे। भाई अगर सरकार उसी की भाषा मानती हो तो आंदोलन शुरू करवा देते हैं, फिर क्यों पुलिस को भेज रही है घर पे? क्यों लोगों को दिल्ली नहीं आने देना चाहते? राइट, वो प्रोटेस्ट करने का तो सबका अधिकार है, तो फोर्स को भी कह दो कि ना रोक के किसानों को, पूरे किसानों को रोक रही है, ठीक है, उनको मत रोके, उनको आ जाना तो दिल्ली में ही आ जाएंगे लोग। मतलब क्यों रोक रही है फोर्स भाई किसान को? मतलब आप बैरिकेटिंग लगाओगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनके घरों पर पूरे पुलिस डाल लोगे आप, और फिर कहोगे जी आंदोलन तो हो नहीं रहा। आप जो ठीक बात है बात उसकी कर लो, आप किसी को जबरदस्ती नहीं दबा सकते। मुझे वो किसान बताओ कि जिसने एमएसपी से ज्यादा पे बेचा हो तो हम भी उनसे सलाह ले लेंगे, और कौन सा फार्मूला उनके पास में है हम भी उसको अख्तियार कर लेंगे, हम उन्हीं की बात मान लेंगे। हम कोई मना थोड़ा कर रहे, हमें कोई सरकार से कोई जिदबंदी थोड़ा है हमको। भाई अगर फार्मूला देश में है एमएसपी से ज्यादा पे बिकने का फार्मूला कोई है तो हमको भी बता दो, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वो फार्मूला सरकार क्यों नहीं बताती? 200 ट्रैक्टर ट्रॉली शाहजहांपुर में धान की भरी खड़ी है पोया तहसील में, उनको एमएसपी पे बिकवा दो, या यहाँ दिल्ली में बढ़िया रेट मिलता हो, भाई हम यहाँ ले आएंगे, हमें एमएसपी का दे देना, जो उसका किराया लगेगा वो दे देना। आप तय कर लो, कल यहाँ पे धान मंगवाऊँ मैं, यहाँ पे मक्का यहीं नोएडा से यहीं मंगवा देंगे, मक्का दिल्ली के बॉर्डर पे वहाँ कांटा लगवा दो, और करे केंद्र पे जो सरकारी रेट है उस पर उसकी खरीद करवा दो। आप देख लो, जो अगर ठीक लगता हो तो हम कल से ये भी करवा देते हैं, कल से कह देंगे किसानों को वो बात नहीं है केंद्र पे किन लोगों को मुश्किल हो रही है, कितने लोग आज आवाज उठा रहे हैं। कौन सी बात देश रत्न निगम उसकी बात कर रहे हैं कि कितने लोग आज आपके साथ आवाज उठा रहे हैं और कितने लोगों ने अभी आवाज नहीं उठाई है। क्या उनको इन लॉ से वही प्रॉब्लम है? आपकी जो मांग है राकेश टिकैत एमएसपी की, उसके लिए ये कहा जाता है कि एमएसपी तो आज भी नहीं मिल रहा, आज भी कितने किसानों को कितनी ही फसल पे एमएसपी मिल रहा है, तो वो तो एक लेजिटिमेट डिमांड है, मिलना चाहिए, पर वो प्रॉब्लम तो अभी भी है, नया लॉ आए या ना आए। हमने ये नहीं कहा, सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये नहीं कहा कि एमएसपी पे पूरी फसलें सरकार खरीदेगी, ये नहीं हमने कहा। आप उस पर कानून बना दो, जो व्यापारी व्यापार करेगा वो उसके नीचे नहीं खरीदेगा। ये कानून क्यों नहीं बनाते? ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं बीजेपी वाले, आन के बैठ के यहाँ पे और पूरे देश को गुमराह करते हैं। अरे एमएसपी पे आप कानून बनाओ कि कोई भी व्यापार करेगा उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा वो, ये कानून तो बनाते नहीं। जिस पे कानून बनना था उस पर तो कानून नहीं बनाएंगे, वैसे ये कानून लेकर आएंगे। पुष्पेंद्र सिंह, ये गांव में जाएंगे, 775 गाँव में करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या आप इस पे ऐड करना चाहते हैं जो राकेश टिकैत कह रहे हैं? अरे किसान तो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ उन्हें अपनी डिबेट यहाँ पे करो ना, दिल्ली में किसान तो बैठा हुआ है ना। आप पंचायत के सारे मंत्री जो इनकी एडवाइजर कमेटी है, आप यहाँ पे बैनर लगाओ, अपने स्टेज लगाओ, पंचायत तो बैठी हुई है, आप इनको समझाओ ना, आओ यहाँ पे
कौन मना कर रहा है? ओके, लास्ट कमेंट फ्रॉम गांव पुष्पेंद्र में सिंह जाएंगे, जी। गांव में आप पुष्पेंद्र इनको सिंह जी, भेज दो। अब आगे गांव क्या के लोग तैयार बैठे हुए हैं। बातचीत तो इनका तभी हो इंतजार कर रहे सकती गांव में। है, बातचीत तभी हो सकती है पुष्पेंद्र सिंह जी, जब दोनों साइड थोड़ा थोड़ा नेगोशिएट और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। देखिए, हमारे आदरणीय बड़े भाई जो राकेश टिकैत जी, बड़े किसान नेता बैठे हैं, उन्होंने सही बात कही है। एमएसपी के विषय में एक कानून यदि ये बना देते कि भाई एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में भी बाध्यकारी होगी, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, तो कोई आपत्ति नहीं होती, किसान को एक सुरक्षा मिल जाती। इसके अलावा हमने ये भी कहा है भाई तमाम कानून जो है इनको आप फिलहाल जो है सस्पेंड कर दो, इनको अलग हटा दो और बातचीत शुरू कर लो। तो एक कमेटी के माध्यम से जो बातचीत होगी, वो जो निर्णय लेगी, नया कानून बन जाएगा। इसमें आपत्ति क्या है? इस कानून से कोई इस तरीके की कोई बात तो हो नहीं गई है कि पुल बन गया उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कानून बना दिया, उसको थोड़े दिन के लिए हटाइए आप साइड में। और इसके अलावा मैंने 2-3 और मुद्दे भी उठाए हैं कि नंबर 1 ये है कि जो पीएम किसान योजना है उसमें 6,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं उसमें 24,000 रुपए कर दें। दूध की इकोनॉमी 1/3 इकोनॉमी है एग्रीकल्चर की, उसमें दूध के रेट जो अमूल की के रेट होते हैं, जो किसानों की अपनी संस्था है, कम से कम अमूल के रेट पे खरीद जो है बाध्यकारी करें, एमएसपी उसकी भी लागू प्राइवेट सेक्टर पे करें। तो ये तमाम मुद्दे ले लें और अगर सब लोगों की सहमति बनती है तो रामलीला मैदान हमें दे दो। अगर आपको सड़कों की इतनी चिंता है, वहीं तो जा रहे थे, जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, उस स्थान पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे गुट, तब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तीव्र तरीके से इसका हल निकालने का काम अब सरकार को करना चाहिए। और वरना ये अन्नदाता यदि खेती से विमुख हो गया तो आज तो आने जाने की दिक्कत हो रही है, कल भुखमरी इस देश में फैल जाएगी, फिर क्या करोगे? वेल, आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम, पर ये बातचीत चलती रहेगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहुंचेंगे किसानों के पास और उसके बाद आगे कमेटी बैठेगी. दैट इज व्हेन वी विल नो. द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ आस्क्ड फॉर दिस फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स to also come and present their view. After that, this special committee will be set up by the top court. It will have farmer groups. It will also have certain experts as part of the panel to help mediate. Will the two sides agree to come to a middle point, a middle ground, so that this situation can be resolved? The government says they're not going to repeal all laws. The farmers cannot definitely say repeal all laws and then only we will go back. The Supreme Court has made it clear, yes, it is their right to protest. They have been allowed to continue to protest over there as long as they do it peacefully. But there must be a purpose to their protest. It can't go on indefinitely. So at some point, the two sides will have to figure out what they agree upon. Thank you so much to the panelists who joined us right now. We're going to take a very short break. On the other side, I also have Mr. P. Chidambaram joining us on this special conversation. He also represented the Punjab government on this case. Be right back. Let's also say good evening to Mr. P. Chidambaram joining me right now for an exclusive conversation. Mr. Chidambaram, representative and representing the Punjab government in this crucial case that we were discussing through the day. Mr. Chidambaram, good evening. Thank you so much for joining us here. I want to start off with a conversation that happened in the court based on the petition which was against the farmers' protest and saying that they should be moved out from that location, to which you said, who was blocking the roads? I'm sorry, I don't comment on court cases. I was appearing for the state of Punjab, and what happened in court is there for everyone to see, and the order passed for the judges will be there for everyone to read. I do not comment on court proceedings. Please continue the interview on the subject, and it concerns me as an individual, as a member of the Congress party. All right, Mr. Chidambaram, let me ask you this question then. It's still a big talking point that people are being inconvenienced, that the people of Delhi and neighboring cities are having to face a problem because a protest is inconveniencing them and blocking their roads. It's a similar argument that was raised by the government even when the Shaheen Bagh protests were taking place. What is your response to this? When a large-scale protest happens, there is obviously going to be some amount of inconvenience, but can the protesters be blamed for it? Again, you're going back to the court proceedings.
I will not comment on court proceedings. I'm not. I'm asking you on the idea of a large-scale protest that takes place anywhere in our country and the argument that is made, be it any issue, from CAA to NRC to the farmers, the argument that is made that you are inconveniencing people, thereby you shouldn't be holding a protest. People don't come to the streets on a whim. People don't leave their homes and camp for 20 or 22 days in the bitter cold as a lark. People come when they suffer or they think they suffer grave injustice. I think you are belittling and diminishing the nature of the injury suffered by the farmers of Punjab as they see it, as they are articulating it. Of course, there will be some inconvenience to people, but what about the massive threat to the lives and livelihood of the farmers of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and other neighboring states? Mr. Chidambaram, the government says they have decided to not hold the winter session of the parliament because of the rising cases of COVID. Now, why is it that the Congress party believes that's not really the reason, but the fact that the government is trying to run away from a debate on farmers? How are legislators meeting in the state legislatures? How are parliaments elsewhere in the world meeting? The British Parliament is meeting when the pandemic toll is rising in the British Parliament. The US Congress is meeting. It is for the government and the parliamentary secretariat to limit the number in the parliament complex to the MPs alone and to keep out all those who are quite unnecessary to the deliberations in parliament. All over the world, if legislatures are meeting, I don't see why, and even in India, if state legislatures are meeting, I don't see any reason why the parliament should not meet. Those who are extremely vulnerable, they will not attend the parliament, but that is part of the process. But the bulk of the members will attend, as they did attend last time. You have to be more careful, take more precautions. But then, is it not all right to say, as the government says, it's just a matter of a few weeks, we meet any which ways for the budget session, and then we can discuss what you want? What is the guarantee that the pandemic would have gone in a few weeks? Mm-hmm. What if if there is a spurt, will they cancel the budget session also? I think the answer is not to cancel the session of Parliament. I think that is far too important an instrument, far too important an institution to be cancelled merely on a whim or a fear. Yes, you have to be careful, but take steps. World over, people are taking steps, and under those restricted conditions, parliaments are meeting. Okay. Can the opposition now mount pressure on the government inside or outside the parliament to repeal these laws that seem to have become the bone of contention even with the farmers? Nothing more, to repeal these laws. The government repeatedly insists, well, the parliament passed it, and the parliament passed it with a majority. Parliament passed it in a manner which is a mockery of parliamentary proceedings. I think you have got selective amnesia, I'm afraid. Go back and see what happened in Parliament on that day. There were members who wanted to move an amendment. They were not allowed. They were sitting in their seats and raising their hands and trying to catch the attention of the deputy chairman, and they wanted to move the amendments. The deputy chairman, with great respect, adjourned the House, ignoring their request. And the excuse trotted out the next day was that they were not in their seats. The visuals, the video proves that they were in their seats. You're absolutely right. Parliament passed that law without a proper vote. How do you accept a Parliament passage of a law without a vote as a proper passage? Then why was it not challenged, Mr. Chidambaram? Could it not have been challenged in a court of law
very clearly, and we debated it at that point of time as well. The Of course, visuals were for us to see, but it was never challenged by any opposition party. you're wrong. There are 3 petitions in the Supreme Court challenging these very laws. I mean, why don't you gather your facts correctly, please? There are 3 petitions, and the 3 petitioners were present in court today. It was listed before court today, and the court said, we are not taking up the petitions challenging the validity of the laws. We're only looking at the other petitions filed by 2 individuals complaining about the inconvenience to all sides by the massive protest on the border of Haryana and Delhi. I think you should go back and gather your facts correctly. You're right on that front. Yes, they did say that they're going to take up the pleas on the validity of laws at a later point. Today was simply about the location of the protest and the protest itself. So let me ask you this question, and we've spoken about it earlier, but that charge continues against you, that it was your party and you specifically that advocated some clauses of these reforms that today, Mr. Chidambaram, you oppose. There again, either you don't read our manifesto or you forget what you read. Please go back and read the 2 paragraphs. We said we must open thousands of markets, farmers' markets in small towns and large villages. Make them accessible to the farmers. If thousands of markets are opened all over India, how many small towns and large village panchayats are there in India? They're running into the thousands. If every small town and every large panchayat has a market, then farmers can access those markets within 2 or 3 kilometers. Today in Maharashtra, the state I represent in the Rajya Sabha, the average distance a farmer has to walk to reach a mandi, APMC mandi, is 25 kilometers. In Tamil Nadu, this APMC is a joke. There's supposed to be 252 mandis. Do you know the entire turnover, annual turnover of the mandi? It's 129 crore. Are you seriously suggesting that the value of the agricultural produce in Tamil Nadu, which has to be marketed as 129 crore, it'll be several times the multiple of 129 crore. Nobody goes to the mandi because it serves a very few people. What we want to do is expand that service. A mandi, a regulated mandi, must be available to every farmer. Once you do that, once thousands and thousands of farmers' markets are opened all over India and make them accessible to the farmer, then this APMC becomes just another mandi. So why don't the manifesto completely? So why can't the state governments, Mr. Chidambaram, why can't the state governments bring in these changes? The state governments of Punjab, Chhattisgarh and Rajasthan have passed their own laws subsequent to the central laws, and they are lightly regulating the areas outside the mandi complex. Yeah. They are. The point is, can we allow an unregulated market for agricultural produce? This is a fundamental economic issue. Address that issue. An unregulated market for agricultural produce will lead to disaster. Why do you have a regulated market for stocks and shares? Why do you have a regulated market for corporate bonds? Why do you want an unregulated marketplace for agricultural produce? I mean, please ask yourself these fundamental questions. If stocks and shares of listed companies must be bought and sold only in a regulated environment, should something so vital as agricultural produce be bought and sold in an unregulated environment? I know we're a little short on time, but since I have you with me, and just a few minutes ago, just a couple of hours ago, in fact, Finance Minister Nirmala Sitharaman spoke, and she was speaking at a CI event where she said that
there is only so much that the government can do in times of a pandemic to help the economy. In fact, she then goes on to speak about how if in 91, when these reforms were brought in, at that point of time, if the then government had done a lot more, the problem would have been lesser today. Essentially, Mr. Chidambaram, the finance minister of our country, is saying that no matter what steps the government takes right now, the economy is going to be in a bad shape because of the pandemic. The FM has no clue of the situation that we were in 1991. I'd like to ask her, where was she in 1991? She's probably out of college or maybe in her first job. Please don't become so presumptuous that you can tell us 29 years later what we should have done in 1991. What we did in 1991, what Mr. Narasimha Rao as Prime Minister and Dr. Manmohan Singh as Finance Minister did in 1991 will be written in letters of gold. That is the turning point which brought India out of a closet, of a cloistered atmosphere. I don't think the finance minister has any credentials to comment on what ought to have happened in 1991. She was given an economy at the end of March 2014, which was growing according to her government's own numbers put out after the NDA government took over, which was growing at 6.4%. And what has this NDA government done with that economy? 8 quarters of slowing growth, followed by 2 quarters of negative growth. So 10 quarters is what distinguishes this government. If you don't know what to do, listen to people. Don't rubbish what was done 29 years ago, and don't plead helplessness of what you can and cannot do today. Every day, eminent economists are saying, do this, do this. Even Mr. Arvind Panagaria says that. The government doesn't listen. The government thinks that all the wisdom is with the government and they don't have to listen to any economists. Don't listen to political parties. Listen to economists. Listen to Dr. Abhijit Banerjee, a Nobel laureate. Listen to Dr. Rajan. Listen to Dr. Jahangir Aziz. Listen to Dr. Arvind Panagaria. Listen to them. What do they say? Unanimously, they say, we require a fiscal stimulus. Yes. You don't want to do a fiscal stimulus, you bear the consequences. Don't plead helplessness. Okay, Mr. Chidambaram, thank you so much for joining us. Always good to have you on the show. I appreciate you giving us your time. Thank you.